तो हे गाइस, आज हम ड्रॉ करने वाले हैं एक बेहतरीन सी ड्राइंग जो कि होने वाली है इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड। और इस ड्राइंग को बनाने वाला हूँ दो पार्ट में। मैं सबसे पहले पार्ट में बनाऊंगा इसका आउटलाइन जो अभी आप देख रहे हो, और मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि आप किस तरह से ड्राइंग को बना सकते हो। और दूसरी पार्ट में मैं इसमें कलर करने वाला हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर रख लेना। सो हमेशा मैं यूज़ करता हूँ पेन पेंसिल, क्योंकि मुझे बार बार अगर शार्प करनी पड़ी पेंसिल को तो भाई बहुत टाइम वेस्ट होता है और मुझे बोरिंग भी पार्ट लगता है। इसमें हमेशा पेन पेंसिल यूज़ करता हूँ ताकि मजा आ जाए आउटलाइन ड्रॉ करने में और टाइम हमारा बच जाए। अगर आपके पास पेन पेंसिल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास जो भी पेंसिल है इसका यूज़ करें और ड्राइंग को आराम से बनाएं। इस टाइम मैंने एक बीच में तिरंगा बनाया और मैंने दोनों बगल से एक एक पतंग ऐड किया जो कि ड्राइंग को और भी खूबसूरत बना रही है। और उसके बाद मैंने एक तिरंगे के नीचे भी इंडिपेंडेंस डे लिखूंगा जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा और जो कि हमारा मेन पॉइंट है। आपको भी इस तरह के ड्राइंग बनाना पसंद है? अगर आप बनाना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इस तरह की वीडियोज आप और बना सकोगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।